So, hi friends, how are you? We have a great achievement with Amanjot Kaur. Obviously, she has cleared his TEF examination up to B1 level, niveau B1, B1 level in a span of 45 days. ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ A square ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 45 days it's a great achievement obviously for a student. How you cop up yourself in a span of 45 days and you crack your B1 level in just in a span of 45 days. So आप थोड़ा अपने बारे में बताओ कैसे आपका जर्नी रहा कि थोड़े सारे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ they are struggling with their PR because of TEF is just like a food for you. So ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ B1 ਲੈਵਲ ਇਨ 45 ਡੇਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਵੈਦਰ ਆਈ ਨੋ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਦ ਵੋਕੈਬ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਸਕੇਅਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਫਟਰ 20 ਡੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 20 days is very small very less time because in French we have a lot of grammar rules ਕਿਵੇਂ Yes. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 20 days it's you the moment you started you're very shy I think the moment you gain Yes. your interest in a span of 20 days so what was the curriculum basically in this French. Actually, sir, you provide the videos that on the ASK Academy channels, and I saw all the videos as well as I practicing the mostly the verbs with the future, past, passé composé, anterior. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ नॉलेज आ गई तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू prepositions आपने यूज करनी बताई कि कहाँ पे कौन से prepositions कौन से यूज कर सकते हैं सो इट्स वेरी convenient way it's very easy for me to make a sentences in French क्योंकि मेरे का vocabulary daily I learn 10 to 20 words a day and तो गाइस all बिल्कुल बिल्कुल आप अमन सही कह रहे हो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू क्रैक योर टेफ एग्जामिनेशन ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਟੈਫ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਵੋਕੈਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਕ੍ਰੈਕ ਯੋਰ 300 vocabularies in a span of 10 days and gradually and progressively will explain our students ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਮਨ ਔਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ TEF ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮੰਥਸ 5 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਟੈਫ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਕੁਐਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 45 ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ B1 ਲੈਵਲ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਕਾਰਡ ਆਲਸੋ it is a realistic record you are having and you are preparing yourself for CLB 7 now and obviously आप वो भी क्रैक कर लोगे वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अभी हम एक प्ले भी करेंगे जहाँ पे एक कन्वर्सेशन का टैप सेक्शन ए में सो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾइस ਕਰੋਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾइस ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ डेफिनेटली सर पॉसिबिलिटी है बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हार्डली तो इट्स पॉसिबल फॉर अस टू अचीव द सक्सेस in very short span of time and I think I suggest that ki most of the Punjabis face the problem in French that is the language barrier we can't able to focus on the words because our tongue is not used grab to the words language easily and it's a Punjabi is a typically our language that is have a hard words and in French it's a very softly we can use the words so mainly ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ इसके ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਇਆ pronunciation ਤੇ and I think I am lacking with that also with the words with the sentences ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ translate ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ
सो गाइस वी हैव ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਅਮਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫॉर ਅਪ ਟੂ CLB5 CL B1 ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਸਪੈਨ ਆਫ 45 ਡੇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਵੀ Mm. ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ Definitely, sir. Je m'appelle Amanjot et j'ai réussi l'examen TEF de Canada de français avec un nouveau BA en français. Et oui, je l'ai fait absolument à moi. Et oui, maintenant, j'ai joué un rôle d'étudiant dans la section A du TEF avec formateur Ankit Mulhotra. Et après ça, elle donnait moi conseil que comment je vous gagnez le TEF examen. C'est très bien, excellent. Non, maintenant, ici, en ce moment-là, mes étudiants, mes students, si vous voulez réussir votre examen de TEF, par exemple, vous voulez réussir votre examen de TOEFL, TCFQ, vous voulez faire quelque chose en langue française, si vous voulez dégager, vous voulez souligner, vous voulez clarifier, vous voulez penser quelque chose, ou faire quelque chose en langue française, si, il est très important seulement en pratique. Vous parlez, il est très important en pratique. Vous dégagez, vous écrivez, il est très important en pratique, on répète les phrases, on pratique avec le grammaire, il y a des règles et les réglementations pour le grammaire, il y a des techniques pour réussir votre examen de TEF. Why? Now, maintenant ici, I will play a role of with Aman with TEF section A, and today I'm going to play. What is TEF section A? Il est très important qu'on pose la question avec nos examinateurs. It is very important that we ask the question with the examiner. So today we have Aman Jot, wherein, because what is step section A? In step section A, you need to ask some question from the examiner. So Aman, today she will play a role of the student and I will play a role of the examiner. Because dans the step section A, il y a de conversation, les deux, two conversation, les deux, entre l'examinateur et l'étudiant, c'est clair. Mais ici, elle s'appelle exactement Amanjot Kaur. Elle joue le rôle, l'étudiant, par exemple, elle pose des questions. Par exemple, les questions pour l'appartement, ok, les intitulés pour l'appartement, c'est clair, ouais. Donc maintenant, ici, Aman, on va commencer la première partie, la first part, TEF section A, et vous devez poser la question et je vais répondre. C'est clair, ouais. Okay. On va commencer. Now, friends, there is a role play activity between student and teacher, which is TEF section A. And votre TEF section A est basé seulement sur votre l'annonce, advertisement. C'est clair, annonce, c'est clair. Now, advertisement. Now, how it works, how student, how Aman can ask some question and how can I reply in TEF section A et le sujet, l'appartement, louer l'appartement. C'est clair, ouais? Vous êtes prêts? Oui, Ouais? Ok, on va oui, commencer sir, je maintenant. suis prête. Mhm. Non, maintenant, ok, ok. Il y a des affiches, par exemple, appartement en loué. Et ici, vous devez poser la question. Il y a des renseignements, il y a des informations. Ouais? Ok, pas de problème. Ok, on va commencer maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Mhm. Yes, Euh, Aman. je suis- Vous êtes prête? Yes, exactement. Je suis prête maintenant. Oui. Ok, d'accord. Allô? Bonjour, monsieur. Mhm. Bonjour, bonjour, mademoiselle. Mhm. Je vous appelle concernant l'appartement que vous louez. Je loué l'annonce sur le magasin d'Amaru et je suis très intéressée. Est-ce D'accord. qu'il est toujours disponible? Oui, exactement. Il est disponible, mademoiselle. Oui, exactement. C'est parfait, monsieur. J'aimerais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Mhm. Quelle information? Oui, vas-y, vas-y, mademoiselle. Oui. Quelle information vous voulez? Oui, monsieur. Tout d'abord, dans l'annonce, vous dites que le quartier est calme. Il est situé loin de centre-ville et de commercial.
Non, non pas trop de loin. Mhm, Oh, c'est parfait, c'est comme convient moi. mhm. À combien de minutes à pied? Euh, à 10 minutes à pied, presque, mais je sais pas, 10 minutes presque, oui, exactement, 10 minutes à pied. Mhm. Oh, merci. Monsieur, l'appartement est à quel étage? Ah, au septième étage, oui, septième étage, oui, oui, mademoiselle. Mhm, Hmm, septième étage. mhm. Il y a un sunset. Oh, oui, exactement, il y en a un, oui, exactement, oui. Hmm, tant mieux. Oh, fait, c'est un meuble de combien d'étages? Il fait 10 étages, mademoiselle. D'accord. Pourriez-vous me dire quelle est la superficie de l'appartement? Il fait 970 pieds carrés. Mhm. Très bien, c'est un grand appartement. Et la pièce principale fait combien de mètres carrés? Presque 620 pieds carrés, presque. Exactement, oui. Euh, c'est un grand pièce. Mhm. Euh, c'est super. Et Mhm. dans l'appartement, est-ce que qu'il y a un balcon? Oui, exactement, il y a un balcon, exactement, oui. D'accord. Je voudrais savoir quelles charges sont comprises dans le loyer. L'eau chaude et le chauffage central, ouais. Elles sont presque 300, elles font 304 mois. D'accord, la prime convient. Ok, Pourriez-vous très bien. m'expliquer, est-ce que qu'il est meuble ou non meuble? Il est semi-meublé et il y a la cuisinière, le réfrigérateur, le lave-vaisselle exactement et le tout lave-vaisselle. Mhm, C'est très bien, c'est parfait pour moi. mhm, Ici est meublé. Est-ce mhm. que la cuisine est équipée? Oui, exactement. Il y a seulement un four, une plaque chauffante et un frigo. OK? Il n'y a pas de lave-vaisselle. Mhm, C'est bien, c'est bon. J'ai encore des questions aussi. Dans l'annonce, vous dites que l'appartement est refait à neuf. mhm. J'aimerais savoir quel type de travaux ont été faits et aussi quand est-ce qu'on on les a fait et euh, Mhm. Bien, on a refait la peinture et la plombière et on a changé tous les meubles de la cuisine, oui. Et on a fait les travaux il y a 3 mois seulement. Mhm. et très bien. Pouvez-vous m'expliquer et de quelle couleur sont les murs de le Mur, logement? mur de logement, d'accord. Tous les murs Murs sont de blancs, logement. mademoiselle. Tous les murs sont blancs. Mhm. Merci pour tous ces renseignements. Je souhaite visiter l'appartement si c'est possible. C'est très Quelles bien. sont les conditions requises pour louer l'appartement? Il faudra apporter quelques documents, d'accord? Les photocopies d'une pièce d'identité et de vos 3 dernières fiches de payer. Si par exemple les photocopies d'une pièce d'identité et de vos 3 dernières fiches de paye. Ouais. Ça va combien si je peux vous donner la photocopie de mon passeport? Ça me convient exactement, ça me convient. Et quand vous voulez visiter le logement, Je suis disponible demain à 15 heures, c'est-à-dire, ça vous dit? c'est très bien. Je note le rendez-vous dans mon agenda. Mhm. Je vous rappelle après visiter l'appartement. C'est très bien, c'est Merci très bien, beaucoup pour c'est très bien, l'information. c'est très bien. Et je vous attendrai. Je vous attendrai la même heure devant l'immeuble. C'est clair et parfait. À demain, madame. Bonne journée, bonne journée.
Bonjour, Adama. C'est très bien. Adama. So that's how, my friends, we see now. Coming in front of the camera, I understand some students, uh, they have their shy nature, they have their fear in front of the camera. Now, obviously, Aman, now as a student, what you suggest, the moment you will participate with me, lot of conversation like that, will you be confident enough? Yes, I can do that. However, you already have done up to your B1 level, but I want you to more improve. The more you will spend a time with me, the more you will improve. See, il est très important. Si, par exemple, vous améliorez votre langage, vous devez Oui, consacrer le temps avec le formateur exactement. Si vous voulez faire, vous voulez parler quelque chose, ici, vous avez la confiance. You have the confidence. So how you feel, Amanjot, to participate? ਤੁਸੀਂ ਕੀ feel ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ participate ਕੀਤਾ ਇਸ program ਵਿੱਚ? And the more you participated, obviously, as a student, I will also nervous, obviously, but ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ feedback ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? definitely, sir. I agree with you because today, first time I am the camera, and it's very Hmm. difficult for me to. Hmm. Sometimes I was just stuck with the words, Obviously, and obviously. uh, And sometimes in front of the it's trainer, we nervous also. Yes, that's obvious. That's quite obvious. Yes, yes. and I think it's boost my confidence today. Uh, Hmm. and also shared my experience on the when I got gave my exam. And that time I really bit confused over अच्छा, there एक चीज because ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਫ सेक्शन बी यू हैव रिसीव्ड, vous avez reçu l'intitulé bénévole, और टैफ सेक्शन बी का bénévole का पीरियड lot of practice, the best part. yes, sir. So But टैफ सेक्शन, I think I am confident in TAF section B because I we did a okay, lot it's of a practice. challenging start for the students. जो मेन Yes. टास्क है सेक्शन बी, यू आर वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो हम लोग कल मॉर्निंग फिर से या इवनिंग में, आई विल कंफर्म यू, वी कैन हैव वन मोर कन्वर्सेशन विच विल अगेन योर टैफ सेक्शन ए एंड टैफ सेक्शन बी, हम साइमल्टेनियसली हर पैटर्न पे एक बार करेंगे. एंड लेट्स गेन और कॉन्फिडेंस. थैंक यू सो मच, अमन. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ Thank ਕੁਝ you, ਹੋਰ, sir. ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਟੈਫ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਕਾਜ਼ they are struggling anything in, they are struggling anything without TEF. So you want to say something now, the last, the end? Nowadays, in Canada, most of the students want to get good marks in very short span of time, but I think it's possible with the help of you because your teaching is very inspiring and you clear the concepts in a very well mannered. I think I never experienced that type of teacher in my life, and I think that is the first time I Merci. am on the camera, and I'm when I am on gave my test that time the teacher also feel me some confident that you will be able to speak. So that time I was stuck with the words, and the starting in the starting I was totally blank at that time, but after that I think I learned whatever I learned from you. I speak all the material, all the things, and all the phrases over there, All the and I phrases. got my Excellent. So thank you so much, Aman. Merci beaucoup. Bonne journée, Merci. enchanté. On va seul rencontrer demain à, mais je sais pas, 4 heures du soir. We will meet you tomorrow at 4 p.m. I will give some script again for TEF section B. Will definitely practice and the topic we'll discuss. Yeah. And thank you so much. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.